Hello and welcome to the highlights of Day 4 of the first game of the Quaid-e-Azam Trophy at the National Stadium Karachi between Sindh and Central Punjab. Day 3 finished off pretty well for Central Punjab with a good partnership between Usman Salahuddin and Mohammad Saad, who saved their side and was in trouble for almost 50 for 4 at one stage of the game. Bowling still has something available from this wicket. You see 2 wickets for the spinner and 2 for the quick Mohammad Umar. So at the start of Day 4, this is what has happened up till now. Central Punjab put into bat 207 and Sindh getting on a lead of 32, getting 239 on board. Central Punjab in reply have 120 for 4 and the partnership between Usman and Saad is going on. So Central Punjab have a lead of 88. Let's join Day 4 as they add to that. एक स्लिप और गली के साथ पहली गेंद करने के लिए आ रहे हैं ताबिश खान। बहुत ज़्यादा पेस नज़र नहीं आई इस गेंद में। विकेट कीपर खासा पीछे खड़े हुए हैं इस वक्त सरफराज अहमद। ये चौथे दिन के पिच है। अब तक हमने यहाँ पर स्पंजी बाउंस भी देखा है और बैट्समैन के लिए आमतौर पर जो अदरवाइज नेशनल स्टेडियम की विकेट रहती है कि आप बाउंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उतनी शायद ये ज़्यादा सहल नहीं है। से बैकफुट पर जाकर खेला बड़े गैर मामूली अंदाज से और बाउंड्री हासिल की। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उन्होंने गेंद को प्लेस किया। That's 100 up in terms of lead and they might go for more. Another overthrow here. So the lead now is 101. Nicely driven, should be runs here for Saad. And that should be 4. Sarfraz not very happy with Tabish as this one was a yard fuller. Just turned the face of the bat at the last minute just to guide that ball through the gap just in front of point. Nice solid push on that occasion. Call is for 3. They have to run hard and it won't go to the fence. 50 for Usman Salahuddin. He raises 50 and his teammates. 2,300 he's already made in first class cricket, Usman Salahuddin. A very good knock. But 150 is up on board. But the important part is what we see underneath. The lead is 118. फुल टॉस इसे डिस्पैच कर दिया। बराबर फ़ायदा उठा लिया मोहम्मद साद ने। डेफिनेटली दोनों बैट्समैन इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि सिचुएशन पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ रही है और ये बॉल जो है इट विल हर्ट मोर। सिंध की जो स्ट्रेटजी है उसको इस तरह के बॉल असगर से एक्सपेक्ट नहीं करती सिंध। और बड़ी तेज़ी से रन मुकम्मल किया। उमर से मिस फील्डिंग हो गई थी। मुसलसल दूसरी नेस्ट सेंचुरी इस मुकाबले में मोहम्मद साद की। खासी तगोदो उन्हें करना पड़ी लेकिन धीमी धीमी बैटिंग का अच्छा सिला मिल गया। 71 ओवर्स कम से कम बाकी हैं और पंजाब के बैट्समैन अब कोशिश कर रहे हैं कि पाँव दबाया जाए, सिंध के सामने हदफ रखने की कोशिश की जाए। और ये देखें आप, ये शॉट चेक करें, इन्होंने अपनी फ्रंट लेग क्लियर की और बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। बहुत अच्छा शॉट और ये मोर पॉजिटिव इंटेंट अब इस दफ़ा साद ने शो की। Down the wicket and charges. Now this way you can. That's probably the first big hit and 6 of the match. Usman Salahuddin made up his mind, marches down and smacks Hassan Mohsin. Full use of feet. Power written all over that shot. First 6 of the match, finally. Oh wow, what do you know? The change just works. Too much bottom hand on that. Played it straight back to the bowler. He gets a wicket at the very first ball in the game. Now just to see if that carried.
that odd change that's brought into bowling, and you break a partnership which you've been looking for the past almost 2-3 sessions. All is well to that end. And now confirmation from the other angle. Remember, this is the first delivery by Saud Shakil. And to me, I think, given that the soft signal is also out, yes, it is as clear as daylight. Confirmation from the television umpire. Is gone after contributing with a very useful 59. So instead of Qasim, they have sent Hassan Ali. Yeah, another one. Big hit. That should go all the way. So yeah, that's what is expected out of Hassan Ali. That's why the fielder is out in the deep. The first big hit by Hassan. Charged against the bowler right from the word go, and an agricultural shot in the end. He's got him. The second wicket for Saud Shakil. 2 wickets in 2 overs. Hassan Ali had got the license to go after the bowling. So just around the stroke of lunch, a lead to be put up somewhere around 190 ideally. Hassan goes for 9. Qasim Akram, the new man in. A full toss to end another successful over for Saud. 83 gone. 204 for 6 Central Punjab. That straightened up. That did straighten up. That did straighten up. He's gone. The umpire took a while, but had straightened up enough to get Usman. The knock comes to an end. That's the 7th down. Finally, brilliant delivery by Fawad, which strained it up towards the batsman. He was on the back foot. What an innings he played. 75 over 181. Not a bad decision in the end. Waqas Maqsood is the new man in. 204 for 7 now. 172 the lead. And that's lunch. We made an over. It's 204 for 7. So the first session of the final day comes to an end. So at the end of the first session on day 4, or the final day, Central Punjab, from the lead of 88, they've put on a total of 172. And the total score is 204 for 7. They lost that partnership, but they did their job. 75 for Osman and 59 for Saad. Looking at the bowling, spinners started getting amongst wickets here. Asghar got 2. Saud Shakil was introduced. He got 2 wickets, and Fawad Alam also joined in with 1. Right up there, Umar got himself 2 wickets as a pacer. So 7 down. This is what the match summary says at lunch on the final day. Central Punjab leading by 172, and Azhar Ali feels they want to add a few more. So let's see what happens in session 2. बिल आखिर दूसरी नई गेंद लेने का फैसला किया है सिंध की टीम के कप्तान ने। दूसरे एंड पर ज़रूर टेल मौजूद है और अच्छा स्ट्रोक खेला, खूबसूरत अंदाज में स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने में कामयाब हुए। पहला चौका लगाया इन्होंने इस इनिंग्स में। एक बार फिर टाइम करने में कामयाब हुए। लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की कासिम ने, सरासर टाइमिंग थी। ये बेहतरीन शॉट था और नई गेंद बल्ले से लगने के बाद काफी तेजी से स्लगिश आउटफील्ड पे ट्रैवल की, बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंच गए थे यहाँ पर। स्ट्रोक खेलने से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और एक और बाउंड्री यहाँ पर मिली। कासिम अकरम अपने रन्स बाउंड्रीज में बना रहे हैं। 3 चौके लगा चुके हैं ऑफ साइड में। काफ़ी अहमियत के हामिल हैं ये रन्स और पॉजिटिव इंटेंट है उनकी। तो फिर जो मैच रन रेट है वो 2.7 रही है। ये शानदार स्ट्रोक खेला, इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया। Yasir is alongside me. Yasir, when we look at this game,
He's coming back for the second. What do you think is going on in the mind of Azhar Ali right now, with the lead of 201 now? He's got hold of it. He's been waiting to get that, the swing and a miss, but this time around, right in the middle. It's going to be a job to get that ball back now. Look, there's a huge fence right there. Right from the middle of the bat, and he clearly enjoyed that. It was very good hit. Right in the slot. That's outside edge, and because when the batting unit is going after everything, you will get these edges. There, you make him move away. He exposes his stumps. He tries different things. That's the pro you got to keep. And there you go. Azhar Ali has called his batsman back. So that's declaration from Azhar Ali and Central Punjab. With 243 on board and a lead of 211, Central Punjab has decided to pull the curtains, and now the target is clear for Sindh. And here comes Hassan Ali to Khurram Manzoor. Where was he going? Umair bin Yusuf, he's just not looking at his partner. So Yasir is alongside me. 212, approximately 50 overs, 10 wickets in hand. You'll go for it as a batting captain right now? it will be very interesting. Like I said, it was a full pitch delivery, and I think it will cross the boundary. That's the first boundary for Sindh, and good start by Khurram Manzoor. It was positive intent. वकास मकसूद दूसरे एंड से नई गेंद शेयर करेंगे हसन के साथ. अच्छा स्ट्रोक खेला, ज़्यादा ज़ोर से हिट करने की कोशिश नहीं की. थर्ड मैन पर ये चीज़ रायगा गया. अच्छा पुल शॉट, दिलकश अंदाज में इसे एग्जीक्यूट किया. उमर का ये पहला स्कोरिंग शॉट था. इन्हें अपने इब्तिदा की रन्स की भी. स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर दो फील्डर थे, लेकिन ये गेंद वाइड ऑफ मिड विकेट गई. और ये शॉर्ट गेंद थी. इस बार मनमानी करने का मौका मिला. उमर यूसुफ ने पूरा फ़ायदा उठा लिया. जिस कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे उसकी बिल्कुल ही बरक्स बॉल थी. शॉर्ट और वाइड पूरा मौका मिला उन्हें आर्म फ्री करने का, और कोई उन्होंने इसमें हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया. अच्छा पुल शॉट, खूबसूरत अंदाज में सरअंजाम दिया इस स्ट्रोक को. अच्छी आवाज़ आई खुरम के बल्ले से. काफ़ी देर के बाद उन्होंने बाउंड्री हासिल की. जोरदार शॉट खेला बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच. Runs here off the back foot. Still, you feel that the outfield could give you more value for your shots. He's testing their running between the wickets, so the batting side chasing at the moment will keep that in mind. So we want adaptable players who can adapt here, who can win here, and who also can win away. It's in the air. It's a good effort, that. Absolutely amazing. Full marks for the effort. It was in the air for a long time, but that's a tough catch to go for. It was Qasim Akram there. Chance down. That was definitely a tough catch running back like that. But those, those need to be taken. He's trying to get into good position, always on the move. He got his hands to it.
Was in the air, too much bottom hand on that. They finally managed to create an opening over here, Central Punjab. Khurram Manzoor trying to clear that fielder at mid-on, has just played half a shot really, and he's handed it over. And Khurram Manzoor has to walk back. And he's gotten out in this fashion, just trying to work it around. And he's played it straight to the fielder. So the first wicket goes, Khurram Manzoor out for 18. Again, pushing for 2. There's a big outfield here. That's the end of the over. So 45 for 1, and the bails are off. So it's tea here at the National Cricket Stadium on the final day of the first game of the Quaid-e-Azam Trophy. Okay, so Sindh, what they've managed at tea is 45 for 1, and earlier on Central Punjab put up 243 for 7. They declared their innings, leaving a target of 212 for Sindh, and in that chase they're doing pretty well, and this game is still wide open at tea on the final day of this opening game, with just that 1 wicket for Amar Bashir, and they're also up for the challenge. So the game is wide open at tea time. 1 session to go. That 166 is what is required in the final session, and Sindh is in the chase. 2 स्लिप्स के साथ हसन 36 ओवर्स का खेल मैसर होगा अगर यहाँ पर हालात ने वक्त ने इजाज़त दी। 36 ओवर्स फेंके जाएंगे। देखना यह है कि सिंध की टीम कितनी देर तक दिलचस्पी लेती है इस हदफ में। यासिर, सिंध ने अपनी जब इनिंग का आगाज़ किया तो अच्छा शॉट बैक फुट पे आए और बाउंड्री लाइन से कुछ अच्छी फील्डिंग, अच्छी स्लाइड करके बॉल को रोका। फिर कट किया, ये फेवरेट शॉट है। इस बार गेंद फाइन गई, कोई फील्डर नहीं था थर्ड मैन पर। एक और चौका उमर का। इस बार ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट, फील्डर हैं गेंद के पीछे लेकिन नहीं रोक सकेंगे। एक और खूबसूरत शॉट, और ये पिच अब जो तवक्कुआत के मुताबिक खेल रही है सिंध की। Finally he has padded up, so we can also see a change in the batting order by Sindh. What a shot. What a shot. Was there to be punished. Nicely sitting in front, and he square cuts that. Oh man, a talented batsman off the back foot. A treat to watch on the final day of this first round. Upish and overslips. That's going to hurt Central Punjab. That line is not really working. At that pace, with that width, it's this really easy purchase for the two batsmen. Nice looking shot once again. Has he found the gap? Yes, he has. The boundaries are coming thick and fast here. 3 in 3 overs. So Sindh have cut out their work. They're going at the rate that's required. He's got in. Yes. The first wicket. Second attempt. So that's the opening they were looking for. You be on target and you'll be rewarded, and that's what's happened here for Qasim Akram. The change has brought the change. It's a bit of extra bounce and just trying to get away from that ball, which kept on coming to the batsman. Well done by Kamran. It's on the third attempt that he's got the ball. It's not that easy when the ball edges and gets onto you. So that's the end of Umair bin Yusuf. 44 of 77. He's done his job, opening with Khurram Manzoor. Yes, a change in the batting order. Sifraz is the new man in. Just like that. He's asking for 3. So minimum you get 2. He might come back. He's quick. And he decides against it. So that's the key. Why he's here. You might not see those big sixes or boundaries. It's
Still Asad Shafiq has been padded up for a while now. Shot. Nicely driven to bring up the 100. 103. And on with the chase. Sindh. Beautiful shot leaning into it. Typical of Sarfraz, in total control of that shot all along the carpet. He had to push that towards the boundary line. शानदार क्रिकेट. इस बार दौड़ने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है. ये सऊद शकील हैं. बैटिंग लाइनअप में खासी डेप्थ है सिंध के. एक और दिलकश स्ट्रोक, एक और चौका सऊद शकील का. सनसनीखेज बैटिंग. और लगता ये है कि सऊद शकील एक डिफरेंट पिच पे खेल रहे हैं. ये चौथे दिन की विकेट है. यहाँ पे ड्राइव करना कभी भी इतना आसान नहीं लगा. और अब दोनों जानिब खेल रहे हैं. आसानी के साथ दूसरे रन के लिए वापस लौट जाएंगे सऊद शकील. उनकी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हुई. सिर्फ 52 गेंदों में आसाब शिकन हालात में उनने ये कारनामा अंजाम दिया. थोड़ी देर तक गेंद हवा में रही और विकेट मिल गई. इस बार फील्डर पॉइंट पर मौजूद थे. रोका है सरफराज अहमद को अंपायर ने. नो बॉल देखना चाहते हैं ज़मीर हैदर. शायद किस्मत उनका साथ दे दे, लेकिन नहीं. यहाँ वकास मकसूद बिल्कुल जायज़ तरीके से ये बॉल डिलीवर की थी. इस मुकाबले में टीवी अंपायर की बहुत ज़्यादा मदद ली गई है. बहुत मसरूफ़ रहे इमरान जावेद. सरफराज को आउट करार दे दिया गया. सरफराज चल कर आगे आ गए थे. ऑन साइड पे मनूवर करना चाह रहे थे क्योंकि फील्डर नहीं थे वहाँ पे. और आसान कैच यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट पर पकड़ लिया. It's still big. It's not going to be an easy task. And there are a lot misfield. of That's not overs going to help. left, but this type of effort cannot be appreciated by anyone. Definitely. That's a no ball. And runs as well off the bat. At least a couple. So -3 more. 67 now. That's been the problem through and through this first game. That's a signal for the last and final mandatory hour. You can fit in minimum 15 overs in this. Down the wicket. For a moment, we thought that the mid-on fielder might come into play. But that was hit well because he was not right at the rope. He was standing at the 75 mark. 50 up for Sindh, and that was a very good shot. जोकर अपील और मुतासिर करने में कामयाब न सके. ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर अग्रेशन दिखाया था और फाइनली ये कामयाबी हासिल की. सऊद शकील की शानदार इनिंग्स का खात्मा. जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे. पिछले पैर पे लगा, विकेटों के बिल्कुल सामने. अंपायर का फैसला उनके खिलाफ आया, लेकिन बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलकर वापस जा रहे हैं सऊद शकील. असद शफीक इम्प्रोवाइजेशन, इंटेंशन क्लियर. दूसरे रन के लिए वापस, लेकिन गेंद आहिस्ता होती हुई तीसरे रन का इरादा यहाँ पर मुलतवी किया. लेकिन इंटरेस्टिंग गेम, मुकम्मल तौर पर इंटेंट ऑन है शाह फैसल. बहुत ही शानदार स्ट्रोक हवा में है. फील्डर ज्यादा आगे आ गए थे और उनके सर के ऊपर से 4 रन के लिए हसन मोहसिन ने कलाइयों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया. यहाँ पर एक खूबसूरत कंट्रोल में रहकर इस शॉट को खेला. फील्डर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन वो किसी भी लम्हे पर इस गेंद तक पहुंचने में काबिल नहीं थे. लेकिन हसन मोहसिन मसले क्रिएट करते हुए दूसरी जानिब हरीफ टीम सेंट्रल पंजाब के लिए बिलाखिर कुछ गेंदों के अल्तवा के बाद चौका निकालने में कामयाब. भरपूर शॉट, अपर कट, 4 रन.
बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, वाह, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और उसे स्मैश कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। सिंध के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। नौजवान हसन का करारा जवाब, जहां पर दूसरी तरफ हसन अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इस मर्तबा इस गेंद को जल्द रीड किया बैकफुट पे जाकर। तो की कॉल है यहाँ पर, लेकिन गैप में है और 4 रन। फुल टॉस मिल गई थी असद शफीक को, पूरा मौका उठाया और अब फतह सिर्फ एक स्ट्रोक की दूरी पर। और क्या ये वो फतहगर लम्हा है? और जी हाँ, यही है। जबरदस्त छक्का असद शफीक का, एहसान आदिल को मिड विकेट के फेंस के बाहर फेंक दिया और ये शानदार फतह हासिल की बहुत ही सनसनीखेज अंदाज में। ये फतह क्या माने रखती है सिंध के खिलाड़ियों के लिए? ये मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया भर में PCB के YouTube चैनल और PTV पर। ये फतह के वो लम्हात, असद शफीक जो कि नॉर्मली गेंद को ज़मीन के साथ रखकर खेलते हैं, इस मर्तबा मौके का एहसास करते हुए उन्होंने एक शानदार छक्का लगाया। Well, what a match that was, and Sindh played so well. They had their work cut out, and everyone contributed, right from the opening partnership to a brilliant 61 from Saud Shakil, 45 Asad Shafiq, Hassan Mohsin, the youngster, pitching in with not out 24. They made sure that they don't deviate from the target, made up their mind and got to the total and won it by 6 wickets. Central Punjab's bowling seemed a bit neutralized because there was not much available for them. The spinner got 2 wickets on debut and a wicket each for Waqas and Ahmed Bashir. Just wasn't enough to get those 20 wickets and win this match. 214 for 4 is what the Sindh team scored, and that was enough to win this game. So if you look at the match summary, Central Punjab 207 when put into bat. Sindh got a lead of 32, scored 239. Central Punjab came back and, to everyone's surprise, declared at 243 for 7 with a lead of 211. So the target was 212 in approximately 50 overs, as we saw, and Sindh comfortably reached with 6 wickets in hand and won this game and got those valuable points. So that's the end of the first game, and I hope you've enjoyed the highlights, and it's goodbye until next time. Just